Hello, my dear students. In previous video, we have started our chapter number 8, the cell, the unit of life. In that previous video, we have talked about the introductory part, that what is cell, then different types of organisms based on the presence of number of cells, such as unicellular organisms, what are multicellular organisms. Then we have seen what is cell. It is the smallest entity which is capable of independent existence and is able to perform the essential function. Then we have seen the scientist A.V. Leeuwenhoek, who studied for the first time live cell. Then Robert Brown is there, who studied the presence of nucleus in the cell. So this was about the introductory part. In this video, we'll talk about cell theory. What will we talk about? We'll talk about the cell theory. So this cell theory is a very important point from your exam point of view. So let's start. What is cell theory? Who had given this cell theory? So let us start cell theory. So up till now, we have seen that every different organism is made up of cell. Okay. Now, this cell theory has certain postulate or certain statement which has been made in this cell theory that we will going to study. So first of all, we'll start with who had proposed this cell theory. So cell theory is proposed by two different scientists. Always remember this. The cell theory was proposed or was given by two scientists. So first scientist was Matthias Sliden, and second scientist was Theodore Schwann. Okay. So these were two different scientists who have independently studied the different cells. ये जो scientist थे बेटा, इन्होंने इंडिपेंडेंटली सेल के ऊपर स्टडी किया था. जैसे कि अभी ये जो फर्स्ट वाले साइंटिस्ट है, ये है मैथ्यूस स्लीडन, were from Germany. He was German botanist, German botanist, and Theodor Schwann was a British zoologist. British zoologist. So we know that what is botanist? The person who studies the botany, means he has expertise. He has done research in the field of botany. That is, he has studied the plants. Whereas zoologist means who studies the animals. So एक जो थे इनमें जो साइंटिस्ट थे वो थे botanist. Is a German botanist from Germany. And सेकंड जो साइंटिस्ट थे वो थे थियोडर श्वान, वो थे ब्रिटिश zoologist. Okay. So they were studying this cell independently. तो ऑब्वियसली ये जो बॉटनिस्ट थे उन्होंने मेजरली जो स्टडी किया था वो प्लांट्स पर स्टडी किया था. और इन्होंने जो स्टडी किया था अराउंड 1838 में. और जो थियोडोर शॉन था उन्होंने जो स्टेटमेंट्स दिए कुछ वो दिए थे 1839 में. ओके. तो फर्स्ट थिंग आपके माइंड में अगर अभी क्लियर हो गया है कि सेल थ्योरी, अगर क्वेश्चन आता है आपको कि सेल थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय only cell theory. After that, modification has been done in this cell theory by third scientist that we will see later. But for the time being, just only a cell theory, if it is asked, then you should write these two
two scientists, that is Matthias Liden, who was the German botanist, and second one was Theodor Schwann, who was the British zoologist. Okay, तो इन्होंने क्या किया, पहले हम लोग देखेंगे कि जो मैथियस लिडन थे उन्होंने प्लांट्स पर स्टडी किया और उन्होंने क्या स्टेटमेंट किया, स्टेटमेंट ऑफ मैथियस, शॉर्ट में लिखता हूं मैं, मैथियस लिडन स्टेटमेंट। पहले वाले जो साइंटिस्ट है उन्होंने क्या किया, एक स्टेटमेंट दिया कि जो भी जो प्लांट्स होते हैं, जो प्लांट्स होते हैं, ऑल प्लांट्स, all plants all plants they are made up of cells, they are made up of plants. He studied number of different plants, obviously वो जो थे वो प्लांट स्टडी करने वाले मतलब कि botanist है, so he studied the plants and he said that all plants consist of similar kind of structures which are called as cell, and this cell eventually forms the टिश्यू। अभी हमको पता है कि व्हाट इज सेल, सेल इज अ बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट, एंड सेल का जो ग्रुप होता है जिसे हम लोग कहते हैं टिश्यू। ओके, तो मैथियस लिडन का जो मेन स्टेटमेंट था वो यही था कि ऑल प्लांट्स आर मेड अप ऑफ सेल, ओके, एंड सेल इवेंचुअली फॉर्म्स द टिश्यूज। ओके, तो ये जो स्टेटमेंट था ये आपके एनसीईआरटी में भी इतना ही दिया हुआ है, और इन्होंने जो स्टडी किया था वो स्टडी किया था सिर्फ प्लांट सेल्स पर, ये ऑलवेज रिमेंबर, इन्होंने प्लांट सेल्स पर स्टडी किया था। ओके, तो ये तो हो गया मैथियस लिडन का जिन्होंने ये स्टेटमेंट दिया। उसके बाद में हम लोग अगर देखते हैं कि थियोडर श्वान जो थे उन्होंने क्या कहा था, तो हम लोग थियोडर श्वान का जो स्टेटमेंट है वो हम लोग देखते हैं। इन्होंने थोड़ा ज़्यादा वहाँ पर स्टेटमेंट दिया हुआ है आपके एनसीईआरटी में, जो ऑब्वियसली ये जो थे ये जोलॉजिस्ट थे, लेकिन लेकिन इन्होंने एनिमल सेल्स पर तो स्टडी किया ही, जैसे कि हमने यहाँ पर देखा कि मैथियस लिडन ने प्लांट सेल पर स्टडी किया था, इन्होंने जो है वो एनिमल सेल प्लस प्लांट सेल्स दोनों पर इन्होंने स्टडी किया, एनिमल सेल्स पे भी स्टडी किया और प्लांट सेल पर भी स्टडी किया। तो एनिमल सेल में उन्होंने एक ऑब्जर्वेशन जो दिया था वो क्या दिया था हम लोग देखेंगे। एनिमल सेल में उन्होंने कहा था कि जो एनिमल सेल्स होते हैं, एनिमल सेल्स जो होते हैं उनमें एक कवरिंग होती है या एनवलप जो होता है, इट इज सराउंडेड, दैट सेल इज सराउंडेड बाय अ thin layered structure, thin layered structure, and that structure is called as plasma membrane. That structure is called as plasma membrane. Aj in this current era we know that plasma membrane is very important, it is the constituent of the cell. Plasma membrane is a covering which delimits that cell, it is also called as cell membrane or plasma lemma. Okay, so that we know, but he has said for it for the first time that एनिमल सेल्स जो होते हैं वो एनिमल सेल्स में जो तीन लेयर कवरिंग होती है उसे कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। लेकिन अभी यहाँ पर देखें थियोडर शॉन ने एनिमल सेल्स पर स्टेटमेंट तो दिया था, लेकिन इन एडिशनल ही हैज आल्सो स्टेटेड अबाउट द प्लांट सेल्स। अभी प्लांट सेल्स के बारे में क्या क्या कहा था, आज हम लोग जब प्लांट सेल्स का स्टडी करते हैं तो एक्सक्लूसिव कुछ फीचर्स होते हैं जो कि प्लांट सेल्स में ही पाए जाते हैं, जैसे कि क्लोरोफिल, क्लोरोप्लास्ट जो सेल ऑर्गेनेल है वो, वैक्यूल्स, लार्ज साइज वैक्यूल्स, ये भी एक एक्सक्लूसिव फीचर है प्लांट सेल का। बट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है दैट इज द प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल। सो ही हैज स्टेटेड दैट प्रेजेंस ऑफ
cell wall was unique unique feature of plant, unique feature of plant plant cells actually. ओके, तो देखिए मैथ्यूस लिडेन का जो स्टेटमेंट, उन्होंने प्लांट पर स्टडी किया और उन्होंने कहा कि ऑल द प्लांट्स आर मेड अप ऑफ सेल विच इवेंचुअली फॉर्म्स द टिश्यू। थियोडोर स्टोन जो कि एक ब्रिटिश जूलॉजिस्ट है, उन्होंने 1839 में क्या कहा कि जो एनिमल सेल्स होते हैं दे हैव आउटर थिन लेयर स्ट्रक्चर विच इज कॉल्ड एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। देन आफ्टर दैट he also stated that plant cells have unique structure which is exclusively found, जो कि प्लांट में ही पाया जाता है, that is the cell wall. So presence of cell wall, presence of plasma membrane was said by the Theodore Stone, who was the British zoologist. So they together formulated the cell theory. Okay. They together formulated the cell theory. लेकिन यहाँ पर जो सेल थ्योरी है वहां पर उन्होंने एक गलती कर दी कि एक उन्होंने जो है एक यहाँ पर जो है वो स्टेटमेंट दिया हुआ है आपके एनसीईआरटी में कि यस, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स, देयर प्रोडक्ट्स आर आल्सो देयर, बट दे हैव नॉट स्टेटेड द ओरिजिन ऑफ सेल। मतलब कि सेल ठीक है, सेल है, लेकिन वो जो सेल पहला सेल है या तो फिर सेल नए सेल जो है वो कैसे फॉर्म होते हैं, हाउ द न्यू सेल्स आर फॉर्म, हाउ द in multicellular organism we have seen that multicellular organism consist of lot of different types of cell, लेकिन जो न्यू सेल्स है वो कैसे फॉर्म होते हैं। तो यहाँ पर एक बड़ा लिमिटेशन यहाँ पर जो है सेल थ्योरी को आ गया। दैट लिमिटेशन वाज दे did not did not explain the origin of the cell। ओके, ओरिजिन ऑफ द सेल, ये तो हो गया सेल थ्योरी, जो कि दो जो साइंटिस्ट है उन्होंने जो स्टडी किया, एक ने प्लांट सेल पे स्टडी किया, सेकेंड वाज द थियोडोर स्टोन हु हैज स्टडीड बोथ प्लांट सेल एज वेल एज एनिमल सेल्स। So they had not able to explain how the new cells get formed, how the cells are originated. So that lacuna is fulfilled by the another scientist who was third scientist who was uh, Rudolph Virchow. Rudolph Virchow. In 1855, Rudolph Virchow has added something to this cell theory, and which was later on modified, and modified cell theory is then accepted. So what he said, he, all the all new cells arise from pre-existing cells। ओके, और इसे एक स्टेटमेंट है जो कि लैटिन लैंग्वेज में उन्होंने कहा है, दैट विल राइट डाउन दैट सेंटेंस विच इज कॉल्ड एज omnis cellula e cellula। omnis cellula e cellula, ये जो है ये लैटिन लैंग्वेज है, लैटिन। इसका मतलब होता है कि जो भी न्यू सेल्स यहाँ पर फॉर्म होते हैं, द न्यू सेल्स विच गेट फॉर्म, दे हैव अराइजन फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। मतलब कि जो फर्स्ट सेल होते हैं उससे ही नए सेल तैयार होते हैं। आज हम लोग सेल डिवीजन के बारे में जानते हैं। वी नो दैट सेल डिवीजन टेक्स प्लेस बाय माइटोसिस और मियोसिस। उसमें क्या होता है कि माइटोसिस में एक अगर सेल हो गया तो उससे
दो सेल्स सिमिलर सेल्स फॉर्म होते हैं, तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज माइटोसिस और सेल डिवीजन यू कैन से। तो ये सेल डिवाइड होते हैं और सेल डिवीजन होके जो है वो न्यू सेल्स फॉर्म होते हैं, मतलब कि ये जो प्री एग्जिस्टिंग सेल है ये इट इज द प्री एग्जिस्टिंग, इससे ही दो सेल्स यहाँ पर फॉर्म होते हैं। अगर हम लोग यहाँ पर सेल थ्योरी को अगर समराइज करना चाहेंगे मॉडिफाइड सेल थ्योरी को, तो हम लोग कैसे कर सकते हैं देखिए। तो इसमें हम लोग पोस्टुलेट्स जिसे कह सकते हैं, हम लोग पोस्टुलेट्स, क्या क्या पोस्टुलेट्स होंगे फिर सेल थ्योरी के, या तो फिर प्रिंसिपल्स कह लीजिए। तो ऑल द ऑल लिविंग organisms all living organisms they are made up of cell and their products, they are made up of cell and cell प्रोडक्ट्स। अभी ये सेल प्रोडक्ट्स मतलब कि क्या होता है, सेल हमने कहा पिछले वीडियो में हमने देखा था कि सेल इज द इंडिपेंडेंट एंटाइटी। तो इसमें जो है वो सब प्रोसेसेस होता है, प्रोटीन सिंथेसिस होता है, लिपिड सिंथेसिस होता है, फैट कार्बोहाइड्रेट सिंथेसिस होता है। कुछ प्रोटीन जो है वो प्रोड्यूस होके जहाँ पर दे आर रिक्वायर्ड वेयर दैट प्रोटीन गोज, एंड दैट इज व्हाट सेल प्रोडक्ट्स आर, मीन्स it is the collection of all these things. Our body is performing metabolic activities which require certain products or chemicals that are eventually produced by the cells, so therefore it is called as cell products. And second जो postulate है कि the new cells gets arised from pre-existing pre-existing सेल्स। तो ये जो स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट का जो क्रेडिट है वो जाता है रुडोल्फ वर्चाव को। ओके, तो आई होप कि ये जो सेल थ्योरी है इसमें हमने देखा कि हम लोग ब्रीफली रिवाइज कर लेंगे कि जो भी एनसीईआरटी में दिया हुआ है वो सभी इसमें कवर कर लिया है। कि जो टू डिफरेंट साइंटिस्ट थे, मैथियस लिडेन थे जो कि जर्मन बॉटनिस्ट थे, in 1838 he has stated that all the plants composed of cells which eventually forms the tissue. Second scientist was Theodor Schwann in 1839. He studied both plant cell as well as animal cell, and he stated that in animal cells he observed thin layer structure which is the covering of the cell, which he called as a plasma membrane. In case of plant cell, he studied that plant cell has a unique outer covering or outer wall which is called a cell wall, and it is the exclusive feature, it is the only feature found in the plant cells. So on the basis of that they have formulated this cell theory ki cell, all the living organisms are made up of cells and their products. Okay, and cell is what, cell is the fundamental basic structural and functional unit which forms later on organs, tissues, and even total organism functioning is dependent on the cell, which was included in the modern cell theory. But here we have not given the modern cell theory, it is the cell theory and modified cell theory. Okay, so after that they formulated this cell theory, but they had the limitations that they have not able to explain the origin of new cells. So that modification was done by the third scientist, which is Rudolph Virchow in 1855. He stated that the new cells get formed from the pre-existing cell, to which he called omnis cellula e cellula, and eventually he has given the final shape to this cell theory, which is also called as modified cell theory, in which that word hominis e cellula e cellula means the new cell get arise from pre-existing cell. So always remember students, if you want to, if you have asked this about this statement hominis cellula e cellula, it was not the part of original cell theory, but it was the part, it is the part of modified cell theory. Okay, so I hope you have got the concept of cell theory.
There is lot to say additional, but I hope ki NCA we have to stick over the NCRT, and somewhat allied to that I have explained. No need to go in deeper level at this stage. So I hope you have enjoyed this video. If you like this video, and if you have watched this video till this end, then please share this video to the needy students. Thank you very much.